Hello everyone. Today we are going to study about aquaculture or aquafarming. Here are the contents. Um, so we will study about fish seed production, fish seed, technique of fish culture, management and marketing of fishes and products, latest advancements in aquaculture in this lecture. Here is the introduction. So aquaculture is also known as aquafarming. It's basically the farming of fish, crustaceans, mollusks, and aquatic plants and other organisms. So we culture the water organisms, and aquaculture involves cultivating freshwater and water populations under controlled conditions and can be contrasted with commercial fishing, which is harvesting of wild fish. Now, what is a fish seed and fish seed production? So, fish seed is term used in pisciculture. Pisciculture is fish culture, um, and the fish seed term used in pisciculture for spawn, that is fertilized. Spawn is fertilized egg, and here are some terms like hatchling, sac fry, fingerling, which we should know about if we are studying aquaculture. So, hatchlings. It means hatched young ones but with yolk sac, and sac fry larvae with yolk sac, and fry are 3 to 14 old days young ones, and fingerling are young ones of large fishes measuring 4 to 12 centimeter in length, but commonly this term means spawn. Natural fish seed resources. So we can collect this fish seed from natural resources like river and streams. For that, we have, like in India, we have 5 river systems: uh, Ganga river system, Brahmaputra. So we can collect this fish seed from these river systems. So in Ganga river system, it's present in states of UP, Uttaranchal, MP, and Bihar. Egg collection is done at large scale only at such location where breeding grounds are known. So we should know about the location um, for better collection of eggs. Then spawn collection. The Ganga river system contribute about 50% of country's total production in spawn collection. So it's huge. Then fry and fingerling collection. There are more than 200 centers for fry and fingerling collection in Ganga river system. So Ganga river system is very important in terms of fish seed collection. Then Brahmaputra river system is actually poor, and because of fast flowing river, heavy silt, and coarse bed of north tributaries. The Indus river system is rich for seed production as compared to Brahmaputra river system, but still it's not that rich. The west coast river system, in this the river Narmada contributes in spawn collection of Indian major carps and mahseers. East Coast river system, here the river Mahanadi is the seed collection river Mahanadi is not very good, but the delta region of Godavari and Krishna are rich in carps. Now for riverine spawn resource investigation technique, so we should know about these collection sites. We should know about the distribution combination of fish fauna in selected stretch of river, and what is the topography of river bed and river bank, and then accessibility of the site. So these are very important. Then gears used for collection of spawn. The spawn is collected by a spawn collecting net called shooting net, or also known as benchy jal. So here is the net and the ring and gamcha. Gamcha is used to collect the spawn. Then methods of collection of spawn. So we should know identify spot of maximum availability of spawn. Then full battery of net should be commissioned. So हम वहाँ पे पूरे net लगा देंगे. And then the spawn should be accumulated in gamcha and collected. So method of measuring spawn quantity and temporary storage. For that हमें स्टोरेज करनी है जो हमने कलेक्ट किया है, तो हम उसको 200 ml, 100 ml, 50 ml, 30 ml मेजरिंग कंटेनर्स में
store करेंगे. Then collected spawn may be kept hapas fixed in ponds. Hapas we will study in next 3 to 4 slides. एंड रिवर क्लोज टू बैंक. तो हम जो कलेक्टेड स्पॉन हमने कलेक्ट किए हैं या तो हमको हापास में रखेंगे या फिर हम जो रिवर के क्लोज हम उसको बना पानी में ही रखेंगे, क्योंकि हमें फ्रेश वाटर ऑक्सीजनेटेड वाटर की ज़रूरत है. तो हम उस वे से उनको कलेक्ट करके उनको स्टोर करेंगे. तो indices of spawn quantity and quality. The index of quantity of spawn is the amount of spawn captured per hour. कि हमने कितने spawn captured किए per hour. So this is known as index of quantity of spawn. And the quality index depends upon desirable spawn हमने कितने catch किए and amount of major carps and minor carps in the catch. Now hatchery seed production क्या है. सो हमारे पास मेन प्रॉब्लम आती है जब हम नेचुरली जो फिश सीड प्रोडक्शन में जब हम कलेक्ट करते हैं सीड प्रोडक्शन और सीड को, तो क्या होता है कि जो प्रेडेटरी फिश हैं उनके स्पॉन भी हमारे साथ में मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर जब फिशेस बड़ी होती हैं तो वो आपस में ही दूसरे को खा लेती हैं, क्योंकि प्रेडेटरी फिशेस होती हैं. तो हम क्या करते हैं कि हमने कुछ मेथड्स डिवाइस किए हैं. सो लाइक नेचुरल ब्रीडिंग और बंद ब्रीडिंग. सो इन दिस कुछ एरियाज बनाए गए हैं जहाँ पे हम उनकी ब्रीडिंग कर सकें नेचुरल वे से इन दिस वेट और ड्राई बंस. और induced breeding is also very used in nowadays. So the old method of collection of fish seed from natural breeding places and putting into water bodies to rear was having many drawbacks, like mixing of eggs of predatory fishes, as I already told you. So to overcome these problems, methods of artificial fertilization were introduced. So artificial fertilization, it's method of collection of ova or sperms and mixing them for fertilization by mechanical means. In this method, breeding is induced in fishes. So by heavy showers or by hypophysation. Hypophysation is very important term. We should know about it. So it's done by injecting pituitary extract containing gonadotropins. तो हम यहाँ पे pituitary gland से जो gonadotropins हैं उनको extract करते हैं और जो fish में inject करते हैं ताकि वो early और जल्दी breeding करे. And बट यहाँ पे प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं, जैसे कि ग्लैंड शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम फुली मैच्योर फिश एंड पिट्यूटरी ऑफ सेम स्पीशीज शुड बी यूज्ड. सो हियर इज द पिक्चर. यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन्स इंड्यूस्ड किए जा रहे हैं, फिश में इंजेक्ट किए जा रहे हैं. एंड हियर आर फिश एग्स which are produced by artificial fertilization. Then breeding hapa. So these are rectangular structure formed by cloth and supported by bamboo sticks from all sides. The cloth uses mainly closed mesh mosquito net. So selected breed is held in hand net and introduced in hapa. तो यहाँ पे हम hand net में अपनी breed जो हम selected breed हम different hapa में एक different breed तैयार कर सकते हैं. जैसे कि this is the hapa. स्पॉनिंग जो होती है हमारी 5 से 7 घंटे बाद होती है इंजेक्शन के. तो eggs swell up in water. The fertilized eggs are transparent and look like pearl, whereas unfertilized eggs look opaque and whitish. So यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि कौन से fertilized हैं कौन से unfertilized हैं. इकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस ब्रीडिंग. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाइक हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर है. टेम्परेचर जो वाटर का है वो 24 to 31 होना चाहिए, बिकॉज वार्म वाटर स्टिमुलेट्स मैचुरेशन ऑफ गोनाड्स. एंड द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर प्रमोट्स ब्रीडिंग, बिकॉज फिशेस को आदत होती है, जो रिवर एंड फिशेस होती हैं उनको रिवर में कंटिन्यू और कॉन्स्टेंट फ्लो रहता है वाटर का, तो उससे उनकी ब्रीडिंग जल्दी होती है. एंड ऑक्सीजन कंटेंट शुड बी हाई. लाइट फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी जो है, और अगर लाइट आवर्स इंक्रीज हो जाएं तो वो इंड्यूस करता है अर्ली मैचुरेशन एंड स्पॉनिंग इन फिश. एंड द नेचर ऑफ हैबिटेट, द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स एंड प्लांट्स फॉर एग लेइंग stimulate the fish to breed. And then seasonal changes which affect hypothalamus, which in turn affect secretion of pituitary hormone. Now fish feed. हमने पढ़ लिया है स्पॉन कलेक्शन एंड ब्रीडिंग के बारे में. अब फिश फीड अगर हम उनको रेयर कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, तो हमारे
Feed is very important. So fishes are adapted to have wide range of feeding habits. Some fishes are herbivores, some are carnivores, and majority of are omnivores. So some fishes are plankton feeder as well. For example, Sirhinus, Reba, and Hilsa hilsa. तो plankton feeders बहुत कम rare species होती हैं, but there are some species, okay, which are surviving on planktons actually. So, Scapper claws classify natural food in three groups: main food, occasional food, and emergency food. Main food तो वही हमारा जो natural food जो fishes अपने natural system में खाती हैं. And occasional food, the food is also liked and consumed when available, but it's not the natural food. And emergency food is this food is taken when preferred food is not available. So this is the emergency food. देन नेचुरल फिश फूड में क्या आ जाता है, जैसे साइक्लॉप्स, स्टेफनिया एंड मॉस्किटो लार्वे. Then artificial food is also given if you are going to culture the fishes. The artificial food is given to fishes in addition to natural food. So supplementary food is required to survival and growth, and it's called artificial food. The commonly used artificial food for carps are rice bran, oil cakes of groundnut, coconut. Okay, so the artificial food is of different types. Artificial feed or spawn is जो हम spawn को देते हैं artificial feed, वो basically powdered oil cakes होते हैं. And the feed should pass through fine meshed sieve, क्योंकि वो इतने ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, तो उनका पाउडर करके ऑयल केक को दे दिया जाता है. एंड जो आर्टिफिशियल फीड ऑफ केटला केटला है उसमें मस्टर्ड ऑयल केक है, व्हीट मिक्सचर एंड सिल्क फॉर्म प्यूपे हैं. The poultry feed is also given because it's very rich and it's gave satisfactory result in spawn rearing because it consists of crude protein, which is 16%, ash 3.5%, phosphate, moisture, and vitamin A, B2, and D3. So the powdered algae and aquatic weeds also used as artificial feed. The artificial feed should have following characteristics. तो वो readily acceptable होना चाहिए, फिश उसको खा सके, इजी ट्रांसपोर्टेशन, इजी डाइजेस्टिबिलिटी हो, लो कॉस्ट हो, अबेंडेंटली अवेलेबल हो. तो दीज आर सम फैक्टर्स जो आर्टिफिशियल फीड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके होने चाहिए. देन कन्वर्जन रेट. सो कन्वर्जन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ फीड and directly proportional to quantity of feed and inversely proportional to weight increases. So it's called food coefficient, growth coefficient in fishes. Then quantity of feed पे बहुत ज़्यादा depend करता है conversion rate. Then pelleting. The dry feed is called pellet. Okay, here you can see these are the pellets which is dry feed. And ये जो है स्टीम एंड मॉइस्ट हीट से बनाया जाता है, जिनका टेम्परेचर 80 to 90% कर देते हैं ताकि ड्राई फीड बन सके. ड्राई फीड क्या होती है कि जो लंबे टाइम तक वो खराब नहीं होती है एंड वो प्रिजर्व रहती है. सो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पैलेट इंक्लूड फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्प्रेइंग ऑफ फैट और ऑयल. सो द वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिकल फीडर्स भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले अगर आपके पास मैनुअली कोई लेबर ना हो तो देयर आर सम मैकेनिकल फीडर like machines which include hopper, motor and device with timer for regulation of supply of pellets to the pond. तो जिसमें मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है. So here is the artificial fish feed packets. Now use of growth promoting hormones for fish growth. तो जैसे हमने पढ़ा कि हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करा सकते हैं, पर हम ग्रोथ भी करा सकते हैं फिश ग्रोथ जो hormones इनको यूज करके, like sex steroids which is natural estrogen and androgens, then thyroid hormone, growth hormone and insulin. Now techniques of fish culture. So introduction. कब हुई थी introduction? जो fish culture है इंडिया में बहुत पुराना है. Up to 19th century the fish culture involving collection and transport of carp spawn from rivers and stocking of ponds was mainly confined to Bengal, Bihar and Odisha. Later it gradually spread to other states. In 1911, Madras state formed a big fish farm for breeding, rearing, and stocking carps. Following this example, many states like Bengal, UP, Mysore, Punjab, etc. developed pond culture as well. So, pond culture, what is pond culture? So, ponds are small and shallow water bodies, we all know, which is of standing water with slight wind action.
नो एग्जैक्ट लिमिट ऑफ साइज एंड डेप्थ आर लेड डाउन फॉर अ पॉन्ड. ओके, सो कोई एग्जैक्ट नहीं है लिमिट, बट मेनली माना जाता है कि 3 तरह की लेक्स होती हैं, पॉन्ड्स होती हैं. The small water body which is remnant of lakes earlier. Okay, the small shallow bodies which not develop as lake, so they turn into a pond. Then those bodies which are constructed or excavated. Okay, so these are mainly man-made. The pond also classified as village ponds, irrigation ponds, spill pond, and rainwater ponds. The ponds also called perennial pond if water is always present, like all the year, and if water is present seasonally, called temporary ponds. So हमें ponds के बारे में भी पता होना चाहिए if we are studying aquaculture. Various types of ponds में हमें पास again आ जाती है nursery pond, जो where hatchlings and fries are kept for growth. Okay, these are nursery ponds. Like we can compare it with plants. Okay, nursery pond where hatchling and fries are kept for growth. These are small water reservoirs near the hapas. These prepared before hatching of hatchlings. The nursery pond should be kept free of predatory and weed fishes. Then in nursery ponds हैवी मोर्टेलिटी ऑफ फ्राइज होती है, क्योंकि वहाँ पे अगर लैक ऑफ suitable food हो, decreased oxygen level due to overgrowth of plankton, sudden changes in quality of water, presence of predatory fishes, the precaution should be taken. Okay, and so this is the picture of nursery pond, and here are fingerlings. Now rearing ponds. Rearing ponds are to maintain proper growth of fingerlings. These are longer and narrower to provide long distance swimming to the fishes. Okay, so swimming के लिए भी fishes, जब fishes बड़ी हो रही होती हैं, उनका growth हो रही होती है, तो they need more space to swim. So it helps in proper growth of fishes. The food supply should be according to population of the fingerlings. This pond should not have any type of predators. When fingerlings attain size of more than 20 centimeters, these are transferred to the stocking ponds. Okay, after rearing ponds, the fishes are transferred to stocking ponds. To avoid transpiration of parasites, antibiotics like methyl blue, copper sulfate, etc. are used. So this is the rearing pond, larger area. Then stocking ponds, these are large sized ponds where fingerlings are allowed to attain full size and kept there till harvesting तक हम उनको रखते हैं. In this pond the fishes are provided artificial food in the form of oil cake, mustard, powdered rice and groundnut. Harvesting, तो उसके बाद एंड जो स्टॉकिंग पॉन्ड के बाद हम करते हैं हार्वेस्टिंग. द प्रोसेस इन विच द फुल ग्रोन फिशेस आर कैप्चर्ड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. द मेथड ऑफ कैप्चरिंग फिशेस फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड फिशिंग. So here is the stocking pond picture. Now arrangement of various type of fish pond, तो हमने पढ़ा different kind of हम ponds बना सकते हैं, rearing, stocking. Okay, so some system were devised like rosary system. In this the various types of ponds are constructed in a series. Okay, all ponds are linked by a channel which supplied to first pond by water source. It's drained by channel which supplies water to other pond. And parallel system में क्या होता है कि in this type of arrangement ponds may be built in single series of 2 parallel series. All ponds are arranged in parallel lines but they have separate inlets and outlets. So an ideal fish farm में क्या होता है कि हमारा फर्स्ट वन जो है ये ब्रीडिंग पॉन्ड है, and then second is hatching pit where the hatching is done. Then here is the nursery pond. Then fourth one is the rearing pond. Fifth is which is larger in area and the stocking pond. And sixth is marketing pond. There is also running water culture. So to increase the fish growth and the running water system can also be applied. In this culture, water of the ponds is changed regularly by the flowing water system. Advantages क्या होती हैं? क्योंकि small ponds जो हैं are sufficient if enough water supply is there. We don't need to have large ponds. Okay,
फिश ग्रोथ occurs at high rate, so shortening of time, जल्दी हमें फिश मिल जाती हैं for marketing. Then income of farmers increases due to more growth of fishes. The main fish variety used for this culture is Cyprian Scarpio, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेती है. This culture is also performed in reservoirs formed across the rivers and lakes present on the way of rivers. रिसाइकल्ड कल्चर भी होता है, जहाँ पे रिसाइकल्ड वाटर कल्चर में क्या होता है, कंजर्व वाटर while performing the fish culture. In this technique, nursery ponds, rearing ponds, stocking ponds interconnected होती हैं by channels के through. So this helps in conservation of water, and pisciculture can be performed with small amount of water. तो वही वाटर जो नर्सरी पॉन्ड है, रेयरिंग पॉन्ड है, वो सारा आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं चैनल, तो वो यूज हो जाता है एक दूसरे के लिए. So this culture of fish is practiced as recirculation aquaculture system, which is known as RAS. This continuous supply of clean water, तो कंटिन्यू वाटर रहेगा तो चैनल के थ्रू एक दूसरे में जाता रहेगा, एंड दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो भी मेंटेन रहता है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, एंड द फिशेस कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर. Fourth one is cage culture. The rearing of spawn to produce fry or fingerlings in cages is called cage culture. This technique was first time used in Pungar swamp in Tamil Nadu. The cages are made of galvanized steel wire frames with nylon meshes or simply bamboo frames are used. In India, the fishes culture are chana species, um, and Clarius anabas mistus sardinella. The bottom of cages is kept above to prevent entry of predatory fishes and escape of fry. तो मतलब क्या है कि यहाँ पे cages बनाई जाती हैं, you can see here in the river. Okay, so in natural system, so we don't need water from outside or something like that. तो यहाँ पे केज है, बाहर से कोई फिशेस, प्रेडेटरी फिशेस नहीं आ सकती हैं, और हमारे जो फिंगरलिंग्स हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं, बट स्टिल दे हैव कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर. ना पॉलीकल्चर में क्या होता है कि हम 2 और मोर कम्प्लीमेंट्री स्पीशीज ऑफ फिशेस को कल्चर करें एक ही पॉन्ड में, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज कंपोजिट फिश कल्चर और पॉलीकल्चर. इंडिया में वेरी गुड प्रैक्टिस है इन विच केटला क्योंकि फिशेस में भी वर्टिकली वो सेपरेटेड होती हैं. जैसे केटला है, इट्स सरफेस फीडर, सरफेस से फीड करती है. लेबिरोइता कोलम फीडर है, एंड देन सिरिनस निकला है, वो बॉटम फीडर है. तो इनको हम साथ में कर सकते हैं रेयर, तो दे कंपटीशन जो है वहाँ पे इतना नहीं होगा. सो एडवांटेजेस क्या है कि ऑल नेचर्स आर कम्प्लीटली एक्सप्लॉइटेड, तो हमें को टेंशन की जरूरत नहीं है कि एक दूसरे में कंपटीशन हो among different species of fishes, as I said. So these fishes are beneficial to each other, and this result in more fish production at low cost. So also very good for rearing good number of fishes. Then management and marketing of fishes and the products. Management of fishery. To get maximum yield and good quality of fishes from any type of fishery, proper fishery management should be done. It's more successful in culture fishery than capture fishery. Okay, तो अगर हम कल्चर करते हैं तो हमारे ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा होते हैं देन कैप्चर फिशरी. It can be performed in 4 steps. Proper selection of culturable fish. हमें पता होना चाहिए हमने कौन से species को कल्चर करना है, हमें उसके बिहेवियर के बारे में, उसके क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए. देन फिश सिलेक्शन ऑफ फॉर सिंगल क्रॉपिंग, और सिंगल क्रॉपिंग हम कर रहे हैं, सिंगल फिश क्रॉप को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें मोनोकल्चर पॉलीकल्चर को देखना है. प्लेसेस इन फूड चेन का फूड प्रेफरेंस क्या है. फिश सिलेक्शन फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग की अगर बात करते हैं तो हमें देखना है कि वहाँ पे अनप्रोडक्टिव पीरियड को हमें रिड्यूस करना है, कि हम ज़्यादा गैप ना आए साल में, हमें ओवर द ईयर मतलब प्रोडक्शन मिलती रहे. द फिश वेराइटीज प्रोड्यूसिंग मल्टीपल क्रॉप्स शुड बी यूज्ड. मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड बाय पॉन्ड ड्राइंग, पॉन्ड को हमें बीच बीच में ड्राई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन पॉन्ड ऑक्सीजनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो पॉन्ड की ऑक्सीजनेशन, जब उनको ड्राई करते हैं, जो नीचे वाले जो सॉइल होती है हम उसको ऑक्सीजनेट करते हैं सो दैट सॉइल में ऑक्सीजन की कमी ना हो. एंड देन लाइमिंग ऑफ पॉन्ड फ्रॉम
with lime soda and control of CaCO3 जिसको हम बोलते हैं. सो लाइम के साथ हम पॉन्ड को लाइमिंग करते हैं. देन कंट्रोल ऑफ वीड्स, देन control of fish predators and pathogens, control of pollution, addition of fertilizers for fish growth, proper use of supplementary food, food once a day during autumn months and twice a day in other two seasons. तो हमें फूड को देखना होगा कि ऑटम मंथ्स में हमको एक टाइम दे रहे हैं और ट्वाइस अ डे इन अदर टू सीजन्स, सो दैट सप्लीमेंट्री फूड प्रॉपर यूज हो. Proper stocking of ponds to get optimum size of fish. The pond should be stocked much below its carrying capacity. Okay, so that oxygen की कमी ना हो fishes में. Then economics क्या है fish farming के. Fishery is of great importance to human beings by providing food. Most of fishing industries yield a number of byproducts of commercial importance. Fish as food. So fishes are of great importance to humans in form of food. Fish contains less calories, good amount of protein and less fat. Fish meat also contains omega-3 fatty acids, vitamins like A, D, E, minerals like zinc, iodine, and selenium. So fish is widely used for food. It's also used to extract liver oil. It main source of vitamin. So liver oil is main source of vitamin A. Through some fishes also contain vitamin C, D, and E. Vitamin E acts as antioxidant of vitamin A. Fish meal. It is prepared from waste of fish oil or canning industry or from the whole fish of non-oil type. Fish meal is used as major food of domestic animals like pig, cattle, poultry. Fish protein. It is the form of white powder extracted from fish waste by removing fat and contain 80 to 90% of soluble proteins. तो ये हम कैटल्स को और पोल्ट्री और पिग फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं. Here are some pictures of liver oil, fish meal and fish protein concentrate. फिश जो है फर्टिलाइजर जो वेस्ट होता है फिश मील प्रिपरेशन का जो बच जाता है मैन्योर वो कॉफ़ी एंड टी टबाको प्लांटेशन भी यूज़ कर सकते हैं. फिश ग्लू भी बनता है जो कि स्किन से बनता है फिश की लाइक कोड, हैडॉक, पोलोक एंड हेक. Pharmacopoeia, these are those byproducts which are used in Ayurvedic and Unani system of medicine. So again important. देन हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं विच आर हार्ट फ्रेंडली एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स इन ब्रेन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो प्रिवेंट osteoarthritis. Now fish glue, you can see fish glue is also prepared. Now what are the latest advancements in aquaculture technology? The fisheries and aquaculture in Asia contributes 45% of world fish production. So the production of cultured fish can be increased by introduction of transgenic fish, which can grow faster and have more nutrients. So in future we can introduce the transgenic fish. Biotechnology in fisheries. Biotechnology offers great promises for fish production, increasing nutritive value of fishes and fish disease control. Biotechnology in fisheries is done by various techniques. Genetic identification and genetic manipulation act as very important tools. So these techniques are for like a cryopreservation of gametes. So क्रायोप्रिजर्वेशन में हम फिशेस के जो स्पॉन होते हैं एग्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. फिश के स्पर्मेटोजोआ हैं वो क्यूसेंट मीन्स रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, बिकम एक्टिवेटेड आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर. थॉइंग इज डन इन बिटवीन वाटर बाथ. हमें उनको टेम्परेचर देना पड़ेगा 10 to 16 डिग्री सो दैट वो एक्टिव हो. एंड देन सक्सेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ स्पर्म्स डिपेंड्स अपॉन अटेंशन ऑफ मोबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ टू फर्टिलाइज ओवा. तो हम इसे देख सकते हैं. देन मोनोसेक्स कल्चर. इन सम फिशेज
one sex has more growth rate than other sex, so that sex is commercially more important. So in fish sex can be reversed, the female can change to male and vice versa, क्योंकि फिशेस में टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा। तो अगर एक स्पीश कई बार क्या होता है कि एक स्पीशीज़ की ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है तो हम कमर्शियली हमें एक अगर हमें मेल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो हमें फ़ायदा यही है कि हम मेल को ज़्यादा ग्रो करवाएँ। सो समटाइम्स ऑल द फिशेज़ ऑफ वन सेक्स आर अलाउड टू प्रोड्यूस सो दैट उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो। इट्स कॉल्ड मोनोसेक्स कल्चर, इसको वो बोलते हैं। मोनोसेक्स कल्चर कैन बी डन इन तिलापिया। सेक्स रिवर्सल भी हम कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ मेल इंटू फीमेल एंड वाइस वर्सा। एट अर्ली स्टेज गोनैड्स हैव अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू व्हिच कैन डेवलप इनटू ईदर ऑफ द सेक्सेस, मेल और फीमेल। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ गोनैड्स। तो हार्मोन्स वेरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। The complete sex reversal was achieved in case of Carassius, which is goldfish. Now, hybridization, again very important. Breeding takes place between two different species which ordinarily do not breed. It's called hybridization. तो हम और वैसे इन नेचर में वो नहीं ब्रीड करते हैं पर उनमें आर्टिफिशियल उनको करवा रहे हैं ब्रीडिंग, तो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. इट्स वेरी कॉमन इन फैमिलीज ऑफ फिशेस लाइक Cyprinidae, Salmonidae, Poecilidae and Persidae, and 50 other families. The crosses between two different species such as Cyprinus carpio and Labio rohita results in production of diploid hybrid called Carprohu hybrid. Now transgenic fish. Transgenesis, also called transfection, is mechanism involving transfer of desired isolated genes or gene fragments or individual chromosome or isolated nuclei from one organism of another, while organisms of produce are transgenic organism. तो उसमें हम अपनी ट्रांसफ़र कर देते हैं डिज़ायर्ड जो आइसोलेटेड जीन होती है, जीन फ्रैगमेंट्स होते हैं, सो दैट ऑर्गेनिज्म जो हमारा प्रोड्यूस हो वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो. On the other hand, uptake of genes by cells of bacteria, other microbes is called transformation. Okay, अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ओके, तो दैट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. अगर हम अपटेक करते हैं जीन्स बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. So the natural look of fish without genetic engineering, you can see, and glowfish is actually the genetic modified animal to be sold as a pet. तो ये pet fishes की फॉर्म में इनको हम ये सोल्ड की जाती हैं ग्लो फिशेस जो कि प्रोड्यूस की गई हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. Now conclusion, we have developed a strategy that simultaneously satisfies consumer demand and environmental conservation within land with and on land aquaculture ecosystem. So by implementing this solution, the current aquaculture issues such as water pollution, high energy inputs, and improperly nourished fish is to be eliminated. We believe that the fish farming can be a very positive industry if right steps are taken to protect the environment and produce fishes that are healthy. So aquaculture is production of aquatic animal and plant under managed and partially controlled condition. So okay, so it's done for recreational purposes, aquarium keeping, water gardens, but most aquaculture of aquatic plant and animals is done for human consumption. Aquaculture is conducted by rural farmers, तो एक तरह से employment का भी काम करता है. And it's done worldwide to produce fish and other aquatic organisms for domestic and international marketings. So this is all about the aquaculture farming. I hope you like it. Thank you very much.